Hello dear friends, so today we are going to discuss about topic number 3.5, that is drift of velocity and the origin of the resistivity. These two things will be discussed in two separate videos. In first video we are going to discuss about the drift of electrons, right? So let us recall what we have discussed in our previous lecture. We discussed about the Ohm's law and we know that V is equals to IR. We also discussed about the another form of Ohm's law, which is J, that is current density, can be given as sigma into electric field. What was sigma? Sigma is conductivity, and sigma can also be given as 1 upon rho, where rho is the resistivity, right? So let us start our today's discussion, that is about the drift of electrons. So let us consider that I am having one box, okay, box hai, which is made up of a metal, and if I consider one electron inside it, then how it gets in motion. अगर मान लो कि वो motion में है, it has certain velocity, but क्या होगा कि it is going to suffer a collision with the heavy and huge fixed ions. तो मान लो कि यहाँ पे एक आयन है which is it is always fixed, right? So what is going to happen? You just consider that कि आपके पास एक बॉल है और वो बॉल को आप बॉल के साथ स्ट्राइक कर रहे हो, बॉल के साथ उसका कोलिजन कर रहे हो, then what is going to happen? It is the ball which has to come back. बॉल को कुछ नहीं होगा, राइट? बॉल है वो वहीं पे रहेगी और बॉल है वो वापस से आपके पास बाउंस बैक होके आ जाएगा, राइट? सो सेम थिंग हैपेंस ओवर हियर इफ इट इज अ हेड ऑन कोलिजन, राइट? इफ इट इज अ हेड ऑन कोलिजन देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? ये यहां से स्ट्राइक होगा, बाउंस बैक होगा एंड वो वापस आ जाएगा. इफ यू रिमेंबर द कांसेप्ट ऑफ अ इलास्टिक कोलिजन, देन इन दैट इट वाज दैट the speed remains same but the direction changes after the collision. collision के बाद जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पीड है वो वही रहती है, लेकिन उसकी डायरेक्शन है वो बदल जाती है. जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हेड ऑन कोलिजन ही हो. मान लो कि यहाँ से और एक इलेक्ट्रॉन है जो इस तरह से कुछ स्ट्राइक हो रहा है, then after it may have some other direction also, but let us make it clear, after collision its speed remains same and its direction will be different. Now if we consider so many electrons, instead of considering one electron, we have so many electrons and each electron will have its own direction. कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई लेफ्ट जा रहा है, कोई राइट जा रहा है. There is no particular direction. So if I will try to find out its average velocity, then it will be zero. Average velocity का मतलब क्या है? Average velocity का मतलब है sum of velocity of all the electrons divide by number of electrons. मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, right? मान लो कि if we are having a n number of electrons in a system, एक कोई मेटल है या कोई भी सिलेंडर आप ले लो, okay? In which we have n number of electrons in the system, then I will add the velocity of each individual electron. हर एक की velocity हमें add करनी है. Add करने के लिए we have summation sign. How many electrons are there? So let us say from I equals to 1 to n. N number of electrons are there, and then its velocity. So I am denoting its velocity by VI. Velocity है वेक्टर से दिखाएंगे and I represents ith इलेक्ट्रॉन की velocity, right? So ये हो गया sum of velocity. उसका एवरेज करना है with number of electrons. So I am just dividing it with 1 upon n. So इसका आंसर क्या आता है? आंसर आता है इसका 0. Average velocity of all the electrons, नेट वेलोसिटी है वो 0 होगी. रीजन क्या है इसका? बिकॉज द डायरेक्शंस आर रैंडम, दे आर नॉट गोइंग इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, राइट? तो ये कब की बात है? ये तब की बात है जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया है. when there is no electric field, at that time average velocity of an electrons will be 0, right? तो ये एक concept है
उसके बाद हम बात करते हैं, लेट मी राइट इट समवेयर, 1 upon n summation of I equals to 1 n vi is equals to 0, right? So now what happens if I have some field applied, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड हम दे रहे हैं, so what is going to happen, as we know इलेक्ट्रिक फील्ड जब आता है तो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेलरेट होता है. So let me show you, let us consider a cylinder over here, right? And this is the direction of the electric field. Now let us consider that there is an electron which is located over here, right? तो फील्ड की डायरेक्शन है वो हमने किस तरफ से दिखाई है, लेफ्ट टू राइट, दैट मींस दिस विल बी पॉजिटिव और ये वाला एंड है वो नेगेटिव होगा, राइट? एंड कैन यू टेल मी इन विच डायरेक्शन द इलेक्ट्रॉन विल मूव? इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव एंड इट विल बी अट्रैक्टेड towards the positive side, so it will have a tendency to move towards the positive side. Now if I want to find out at what acceleration's value, if I want to find out acceleration's value, then as we know f is equals to m a के हिसाब से a can be given as f by m, where a is the acceleration faced by the electron, f is force on that electron, and mass, that is mass of an electron. So in this case what is going to happen, यहाँ पे force कितना लग रहा है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, so हमें ये चीज मालूम है कि force can be given as q into e, right? Okay, so over here you can put the value of it, so ये हो जाएगा q into e by m, right? Now how many electrons are there? Okay, sorry, what is the charge on electron? Okay, तो ये q से हमने दिखाया है, but if we consider that charge is negative, so I can put it like this, ये हो गया minus e into electric field by m, so that is the value of the acceleration, right? तो अगर इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखोगे, then the value of acceleration and value of electric field, but over here there is a minus sign. इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों वेक्टर्स हैं, वो दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है, ऐसा क्यों? As you can see over here, the electric field is from left to right, it is from left to right, but as we know the electron is moving from right to left, so it gets accelerated opposite to the electric field, and that is how we have a negative sign over here. So I hope it is clear to you. Now let us try to discuss about the velocity equation, right? तो देखो कि ये जो सिलेंडर हमने कंसीडर किया था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, when electron gets accelerated, तो ऐसा नहीं है कि वो सीधा ही एक एंड से दूसरे एंड पे चला जाएगा. No, it is not like that, right? It is going to strike, it will have collision with the ions. तो यहाँ पे मान लो कि उसको एक आयन मिल गया, राइट? ओके, देन इट मे बी पॉसिबल कि इसकी जर्नी है, इट विल स्ट्राइक, फिर यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे किसी और के साथ स्ट्राइक होगी, देन आफ्टर इट विल मूव टू सम अदर, राइट? तो it won't reach to another end directly, but there will be lot of collisions, right? So let us take time ti. अभी हम एक ith इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं. Let us consider that there is an ith electron, okay, and ti is the time that it has been elapsed before the collision. इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक आयन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है जिसके साथ उसका कोलिजन हुआ, एंड देन आफ्टर इट इज गोइंग ऑन एंड ऑन. अभी तक उसका कोलिजन नहीं हुआ है, तो बिफोर जैसे ही कोलिजन हुआ उसके बाद कितना टाइम पास हुआ है टिल द नेक्स्ट कोलिजन, दैट इज व्हाट टी आई, राइट? एंड मान लो कि ये कोलिजन होने के बाद इट्स इमीडिएट वेलोसिटी इज vi, its immediate velocity is vi. At this point its velocity is vi, and then after it is moving. अभी तक उसका collision है वो नहीं हुआ है मान लो, right? Okay,
So if I want to find out its velocity at time t, तो velocity at time t दिखाने के लिए I am using the capital V. बुक में हम बुक के हिसाब से सिंबल लिख रहे हैं यहाँ पे, राइट? तो it is capital V, वेलोसिटी है तो वेक्टर से दिखाएंगे, और किसकी वेलोसिटी है? ith इलेक्ट्रॉन की, इसीलिए हम vi से दिखा रहे हैं. What is this? Velocity of ith electron at time t, at time t, which can be given as, अच्छा अभी हमारे पास काइनेमेटिक्स का इक्वेशन है which is v equals to v0 plus at, राइट? इस इक्वेशन का यूज हम करने वाले हैं, राइट? सो व्हाट इज v? इट इज लाइक v of t, राइट? तो ये हो गया हमारा vi. What is the initial velocity? तो electron has started its journey from here. At that time, what was its velocity? Its velocity was small vi, right? तो यहाँ पे हम लिखेंगे it is small vi. I is, what is I? I represents ith electron की initial velocity, right? Over here, this symbol, right? Okay. Plus a into t. Okay, so what is the value of a? We have the value of a minus of E into the electric field divided by m. And how much time it has, at what time we want to find out? So at ti we want to find out. So this will be ti, right? तो ये इक्वेशन है वो इस तरह से रिप्रेजेंट आप कर सकते हो, right? Then after yes, then after we can consider that if I want to find out average of all, ये किसकी बात है? ये ith इलेक्ट्रॉन की बात है. But if I want to find out average of all the electrons, then what? Then as we discussed कि ये टर्म है वो तो जीरो हो जाएगी if I will make its average as we discussed, right? और बचेगा क्या? इसका ये एवरेज बचेगा and I have to average this out too, right? Okay. तो उससे पहले एक नया दूसरा कंसेप्ट हम देख लेते हैं which is known as a relaxation time, okay, which is to be represented as tau, right? So what is relaxation time? मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे स्ट्राइक हुआ at that time, suppose the time was 3 सेकंड, राइट? दूसरा कोलिजन है वो 5 सेकंड पे हुआ, 5 सेकंड पे, ओके? सो 5 minus 3 that is equals to 2 सेकंड. तो 2 सेकंड तक इलेक्ट्रॉन आराम से विदाउट एनी कोलिजन घूम रहा है, राइट? सो दैट 2 सेकंड is known as a relaxation time. लेकिन ये एवरेज है, मतलब कि सभी इलेक्ट्रॉन्स का. मान लो कि आप कोई गैदरिंग वाली जगह पे गए हो, जैसे कि आप मेले में गए हो, राइट? आप मेले में गए हो, so it may be possible that you may collide with some another person in 5 सेकंड. पहले 5 सेकंड हुआ, फिर जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट कोलिजन है वो भी 5 सेकंड पे हो. ऐसा भी हो सकता है कि 1 मिनट के बाद भी हो, ऐसा भी हो सकता है कि 2 सेकंड के बाद भी हो, दूसरे पर्सन का कोलिजन है वो 10 मिनट बाद भी हो सकता है. सो वी हैव टू टेक द एवरेज ऑफ इट, राइट? तो ये रिलैक्सेशन टाइम है वो एवरेज है, टाउ है. कोई इलेक्ट्रॉन के लिए रिलैक्सेशन टाइम या फिर कोलिजन टाइम है वो ज्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है, बट दिस इज अ एवरेज वैल्यू ऑफ कोलिजन टाइम, राइट? सो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर, टाउ, राइट? सो नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ इट, ओके? तो एवरेज करने के लिए VD that is drift velocity, okay? Drift velocity that is average of this velocity, ठीक है? तो यहां पे हम रखेंगे VI average, but as you can see from this equation I am just putting this value. तो यहां पे भी मुझे एवरेज लिखना पड़ेगा. This is also average, right? Plus इलेक्ट्रॉन की यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू. तो वहां पे हम कुछ चेंज नहीं करेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कोई चेंज नहीं है, सो एज इट इज. मास में भी कोई चेंज नहीं है, लेकिन ti है, सो दैट विल बी आल्सो एवरेज टाइम, राइट? ओके.
Now these value will turn out to be 0 as we discussed, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, प्लस यहाँ पे TI average है, that is the relaxation time, so that is equals to minus of E, then after electric field divide by M, and TI average हो गया वो है tau, right? So I am just rewriting this over here, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ same equation. So drift velocity Vd can be given as minus of E, then after multiplied with electric field by M into tau, right? So this is known as the equation of a drift velocity. So what is so special about this, right? यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से तो ये वेलोसिटी है, लेकिन दूसरी साइड पे आप देखोगे कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, राइट? यहाँ पे कोई टाइम वाला फैक्टर है ही नहीं. सो दिस फिनोमिना इज नोन एज अ ड्रिफ्ट एंड this particular velocity is known as a drift velocity, right? So I hope this derivation is clear to you, and I want you to read as soon as this video is over. तभी आपको एक बार समझ में आएगा. मैंने पूरा का पूरा NCERT टेक्स्ट बुक में से ही आपको पढ़ाया है, and just read it and everything will be clear. Okay, so see part 2 में we are going to discuss the origin of resistivity. Okay, thank you.